Hey guys, what's up? It's me Aarti. Welcome to a brand new video on this channel and today's video is for all those boys जो मुझे बार बार कमेंट्स में लिखते रहते हमारे लिए कब बनाओगी तुम कंटेंट, हमारे लिए भी तो कुछ डालो, सब लड़कियों के लिए डालती हो. सो दिस वीडियो इज फॉर यू एंड दिस इज अ रिक्वेस्टेड वन. किसी ने मेरे किसी वीडियो के नीचे कमेंट छोड़ा था, टेल अस व्हाट डू गर्ल्स लुक फॉर इन बॉयज़ का ऑनलाइन डेटिंग प्रोफाइल. सो आई डिसाइडेड टू आंसर इट. आई डिसाइडेड टू गिव यू सम मुफ्त का ज्ञान टुडे. सो वही मैं यहाँ पर देने वाली हूँ अगले कुछ मिनटों तक. सो इफ दिस इंटरेस्ट यू स्टिक अराउंड एंड इफ you like what you watch on this channel, please hit the like button, subscribe to my channel and hit the bell icon next to it. Okay, after being on online dating apps for I don't know, centuries now. I feel like it's been centuries for sure. Yeah, it's been very long. I have seen many profiles and a lot of you clearly need to watch this video. You guys have no idea what you're uploading and putting there and writing there. So जो मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाली हूँ, this is strictly basis my personal experience and a lot of discussions that I have had with my girlfriends every now and then about boys profiles. मैं बात करने वाली हूँ about top 3 things that girls look for in your dating profiles. The number one has to be personality. लड़कियां सिर्फ फोटोज नहीं देखती है, वो फोटोज देख के तुम्हारा बायो भी पढ़ती है. सो फिलिंग इन दैट बायो इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू कांट जस्ट अपलोड like 5-6 pictures of yours and like not write a single line and get away with it. You know who you all are. You know that. You put those mirror selfies and those car selfies and those pouts and I don't know what all. When I say personality, here's what I mean. Pictures plus bio. So pictures, yes, extremely important. When you upload pictures, guys, please डोंट अपलोड दोज मिस्टीरियस पिक्चर्स जहाँ पे तुम ऐसे पहाड़ पे खड़े हो और तुम्हारी पीठ दिख रही है और उसके बाद अगले पिक्चर में तुम्हारा ऐसे शैडो दिख रहा है, नेक्स्ट पिक्चर में सिलुएट दिख रहा है, अगले पिक्चर में यूर जंपिंग ऑफ फ्रॉम द स्काई एंड यू कांट, नोबडी कैन मेक आउट योर फेस. डोंट बी मिस्टीरियस अबाउट इट. We would want to know who you are, how you look. So upload clear pictures of yourself. It's very annoying to try to figure out how you look from your pictures when you're visible like dots in all your photos. So clear photos डालो. ऐसे photos नहीं होने चाहिए जिसमें मुझे मतलब मेहनत कर रही है to see who you are as a person, because honestly when you are swiping on a dating app, nobody is going to take that much effort. They're going to see your picture in one glance, go read what your bio is and then swipe right. So that's what happens. Please do not put your half naked pictures. Nobody wants to see your topless mirror selfie. I don't know how to say this. I don't know if I'm sounding rude or whatever. I totally get put off when I see a topless picture. फिर बाद में कोई भी कितना भी कुछ भी अच्छा हो, आई एम गोइंग टू स्वाइप लेफ्ट. आई एम नॉट, एंड दैट्स व्हाट आई हैव हर्ड मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स डिस्कसिंग. आई डोंट थिंक सो अ टॉपलेस पिक्चर वर्क्स रियली वेल फॉर मोस्ट ऑफ द गर्ल्स. Most of them, I'm not saying 100% girls don't like it, maybe some might, but mostly नहीं work करता है. और अगर तुम पिक्चर्स डालते वक्त थोड़े थॉटफुली डाल सको तो डालो. बेसिकली इफ इन दोज पिक्चर्स यू कैन ट्राई एंड गिव अ ग्लिम्स ऑफ सम प्लेस दैट यू विजिटेड और सम एक्टिविटी दैट यू डिड, देन इट्स ऑलवेज नाइस बिकॉज दैट कैन ऑलवेज बिकम अ टॉकिंग पॉइंट लेटर. सो गुड पिक्चर्स, yeah, that's important, but pictures are not the only thing that girls see. Even if sometimes क्या होता है ना, लड़कियों का इतना दिमाग होता है कि लड़कियाँ इतना सोच लेती है कि maybe sometimes some people are not photogenic, but let's see how this person is. If he's a fun person, then I'll still meet him. That's how girls function. So they'll go and read your bio. Now this is what mostly makes anybody swipe right. It's never just the pictures. It's always like something that you've written in the bio जो किसी के साथ click करता है and they're like, okay, this is like we are quite alike or this is a talking point, and तभी कोई उसके नीचे या तो comment छोड़ेगा Hinge पे या तो swipe right करेगा Bumble पे. So writing some interesting things in your bio are very important. Don't be very boring. ये कोई LinkedIn का प्रोफाइल नहीं है या तुम्हारा जॉब इंटरव्यू नहीं है जो तुम ऐसे बोरिंग लैंग्वेज में वहाँ पे लिखोगे. Try to make it थोड़ा fun and interesting because obviously everybody wants to talk to an interesting person. The second thing that girls look for, and I'm sure this is true for 100% of women out there, is authenticity or honesty. मतलब you can make your pictures look very cool and funky like you're the coolest dude on earth. You can write the coolest bio, but अगर तुम bluff कर रहे हो ना और अगर तुम मतलब you know what I'm saying, if you're faffing, you're going to be caught. Either you're going to be caught while she's checking out your profile or while she goes and stalks you and tries to find you on another social media platform where you turn out to be the complete opposite of what you've mentioned, or when she talks to you on the phone, or when she chats with you, or finally when she meets you. Basically तुम्हारा bluff कभी ना कभी पकड़े जाने वाला है. So please try and be as authentic and as honest as possible. मतलब like I said earlier, अगर you're not a funny person, don't try to push it. Don't try to crack jokes ज़बरदस्ती. Just be
who you are as a person. Trust me, people love that so much. Trust me, honesty is so underrated. Girls or boys, everybody loves honesty, but I'm right now talking about dating profiles, and I think an honest profile is something anybody would love. Be who you are in your profile and as a person when you meet another person. Yeah, that's number 2. Honesty, authenticity, always very hot, always a turn on, always something that a person is going to get attracted to. Number 3, and the most important point a girl is going to look at, is your intention. Now here's what I mean by intention. आप इस डेटिंग प्लेटफॉर्म पर क्या ढूंढ रहे हो? वॉट आर यू लुकिंग फॉर? आई थिंक बम्बल गिव्स यू एन ऑप्शन टू से इट यू नो वेरी क्लियरली कि तुम्हें क्या चाहिए. द ऑप्शंस आर डोंट नो येट, समथिंग कैजुअल, relationship or marriage. So Bumble has the option of marriage also. I think Hinge doesn't have an option like that, but you can always, you know, say it through your answers, as far as I remember. So yeah, anybody who's on a dating app would want to know कि तुम वहाँ पर क्या ढूंढ रहे हो, because that is the biggest common ground that will determine whether you want to swipe this person right or not. Because if a person is looking for a relationship and you've written something casual, she's not going to swipe you right. But at the same time, तुम्हें authentic और honest रहना है about what you want. Here's where you need to draw the line. There is a very thin line between being honest and between being creepy. There are a lot of boys जो अपने प्रोफाइल में सीधा लिख देते थे, wanna have some fun, wink. What the fuck? I'm going to swipe left. Even if a girl wants to have fun, she will not have fun with you if that's your whatever intro or bio. Please, there is a way to say things. There is a way to communicate things. So अभी बहुत सारे लड़कों को पता है that girls are not going to swipe right if they, you know, directly say hookups or directly say casual. And so they do this really cheap thing of bluffing. They do this cheap shit of saying, you know, I'm really looking for somebody, let's see where this goes and let's go with the flow and da 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 da, and then turns out they were never really looking for anything. Don't do that. एक प्लेटफॉर्म इतना अच्छा तुम्हारी जनरेशन को मिला है, पहले सब होता भी नहीं था, where you can be very clear about your intentions, your motives, and there will be other people who will be clear about their motives, and अगर तुम्हारे motives match होते हैं, then you can go live your life. तो उसका इस्तेमाल करो ना, प्लीज़ बी ऑनेस्ट. डोंट स्टूप डाउन टू दैट लेवल कि तुम बोलो कि मुझे तो कुछ सीरियस चाहिए और तुम्हें चाहिए ही नहीं था, एंड देन यू नो जस्ट टेक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन, क्योंकि ऐसा बहुत ज़्यादा होता है. एंड दिस गोज बोथ वेज, बट राइट नाउ अगेन आई एम डूइंग दिस वीडियो जस्ट to tell boys what do girls look for in their profiles. उसके बाद अगर तुमने तुम्हारी प्रोफाइल में बड़े अच्छे you know words में respectful banner में लिखा है that you are looking for a no strings attached and you don't want something serious in your life right now, so if there's another girl who's looking for the exact same thing, she is going to swipe right. मतलब why will she not? That's one very important point that girls look for in somebody's profile. Everything else can work. तुम्हारे फोटोज बहुत अच्छे हो सकते हैं, तुम्हारा बायो बहुत फनी हो सकता है, पर अगर तुमने अभी लिखा है कि आई वॉन्ट हैव अ नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड एंड आई वॉन्ट समथिंग सीरियस, देन आई विल नॉट स्वाइप राइट. एंड आई थिंक दैट इज हाउ इट शुड बी. देयर इज नो, मतलब किसी का कोई फायदा नहीं है इन मिसलीडिंग somebody else and you know making them think something else. Just be true, authentic and have fun. Yeah, so these are the top 3 things that girls look for in your dating profiles. And इसके अलावा भी छोटी मोटी थोड़ी शैलो वाली चीज़ें होती है, बट आज के वीडियो में हम वो स्किप करेंगे. टॉप 3 चीज़ें तो सारी लड़कियां देखती ही है. तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट्स में बताना मत भूलो. इफ़ यू थिंक दिस इज़ यूजफुल एंड कैन हेल्प एनी ऑफ योर गाय फ्रेंड्स, यू नो, अप देयर प्रोफाइल गेम, उनके साथ तुरंत शेयर कर दो. लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द बेल आइकॉन नेक्स्ट टू इट. एंड कुछ और है बातें करने के लिए मेरे साथ, तो आ जाओ मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. एंड या, ऑन दैट नोट आई एम गोइंग टू गो. सी यू गाइस real soon right here with something new. You take care. Bye bye.